Om Shanti. Om Shanti. जब आत्मा When the soul, सृष्टि मंच पर आती है पाठ बजाने, when the soul comes on this world to perform its part, first and foremost, प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा it's through the elements of 5 elements. मिलता है. The soul receives the body made out of 5 elements. The birth of the body happens through the mother and the father. अन्य संबंध भाई बहन, And then many relatives, relationship, brother, sister, the mother's family, the father's family, uncles, aunts, a lot of relatives, a lot of relationships. कर्मों के कारण And these relationship तो is सत्यो और based on our द्वापर action. So in golden and silver ages, there won't be any bondage कहते of हैं वहाँ की action. जीवन It is said the अकर्मी life over जीवन है. there is beyond the action. अकर्मी जीवन का Akaram, मतलब कि कोई the भी meaning of akaram बंधन नहीं है. means there is no kind of बंधन any में वो bondage. होता है In a bondage, संबंध there में is attachment, but in a relationship, there is तो धीरे affection and धीरे love. जैसे जैसे So slowly, जन्म एक लिया दूसरा लिया when we take one जन्म after the other लेते लेते birth, and when we keep taking birth one after the other, वैसे वैसे धीरे धीरे so slowly, 16 कला संपूर्ण पवित्रता from 16 celestial degree full of purity, the celestial degrees और एक slowly समय begin to आता है reduce. And there comes a time जब सत्युग त्रेता का when आरंभ golden, the silver, the end of the silver तो age, देह का भान शुरू होता है. the consciousness of the सबसे body पहले begins first and ये foremost. भान शुरू होता है फिर When धीरे the धीरे consciousness of the body begins, then slowly and slowly संबंध होता है पर उसमें विकार there फिर is शुरू होता है relationship, but क्रोध then there is लोभ the मोह beginning of vices, of lust, और anger, इसके हिसाब से ego. जो कर्म है And because of that, whatever action वो we हिसाब do, किताब वाला it creates या विकर्म वाला accounts. Either it creates accounts शुरू or शुरू there में is कोई विकार नहीं negative होता है action, vikaram, negative action. परंतु देह In the बनता है beginning, there is not that much of negative देह action. बनने के कारण But फिर because of body सभी consciousness, विकारों का आरंभ होता है. all the vices तो विकार begin. जब भी है और हम So, कर्म whenever करते the हैं कर्म vices के are आधार पर there, and when we perform any तो उस action समय पर based on those vices, विकर्म भी and बनता at है that और time, एक so we are creating संबंध negative नहीं होता है action, लेकिन उसमें vikaram, बंधन बन जाता है. and also there is relationship, but there is the creation समूह of कर्म करके भी bondage. So there's संबंध में bondage of परिवर्तन हो action, जाते and हैं even in बंधन relationship, the relationship gets आज हम transformed into a संसार में देखते bondage. हैं So now when we look in the world, कि संबंध आवश्यक भी बहुत है. relationships are necessary. परिवार परिवार The household path is necessary. हर प्रकार के संबंधों की आवश्यकता है. We need all kinds of लेकिन जब relationships. कर्म बंधन But बनता है when actions become a तो वो सुख bondage, होगा फिर दुख then there will होता be है. attachment, then there is sorrow. कई बार आप देखेंगे कि वो Many नहीं times you मानते have seen तो क्रोध भी सह लेते there's a हैं lot of और दुख भी a बहुत होता tolerance है. because of the anger, and because of जब that, हम that आते हैं leads to sorrow. संसार पर And when we come to the confluence age, तो कर्मों का संबंध में जो भी हमारे संबंध हैं in परिवार relationship, whatever संबंध relationships that में we परिवार have, के संबंध में um, we can't call them as तो relationship as of now because जब there is still हम बचपन bondage. लेते हैं कहते And हैं when बच्चे God, when Baba gives us the तुम तो recognition, सभी says, आत्माएं हो. child, you all are souls. तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान So मिलता as है soon as we get the knowledge of the soul, और हम देही अभिमानी बनने का and we प्रयास start करते the हैं practice of becoming soul conscious, तो हमारा संबंध then हम उसको our कहते हैं आत्मिक relationship संबंध. becomes the soul conscious. Based on एक that, दूसरे our को भाई मान relationship, लेते हैं we start seeing each और other as अपने souls.
So it's a बहुत ही अच्छा spiritual relationship. रूहानी स्नेह कहें, There is आध्यात्मिक spiritual प्यार कहें, love, spiritual affection among the संबंध souls. मधुर हैं, There is एक दूसरे pleasure को in समझना है relationship. There is a lot of affection amongst each other. और हमेशा याद रहता है कि हम And अपने always we remember that we आत्मा में हैं are तो भाई भाई, we are brothers amongst each और other. जब शरीर में है तो भाई भाई And हैं, when we are in the body, we are brothers एक and माता sister. की संतान है। And we are the child, तो वो the जो children of अलौकिक one संबंध है, parent. So this उससे हम spiritual soul ईश्वरीय परिवार बन relationship, जाते हैं। based on that, we ईश्वर की become संतान godly, ईश्वरी परिवार godly बन जाते हैं। family. We belong to the godly family. We are the children of God तो and we उससे belong to the हमारा family सारा of God. व्यवहार भी चलता है, कार्य भी So चलते all हैं, our business or all our और actions आपस में continue जो among प्रेम this. त्याग है वो But आत्मिक there is होता है। also the love and affection that we have amongst each और फिर other is उसमें spiritual. व्यवहार में And because of आत्मा के that, अंदर का जो व्यवहार है the interaction वो based on the अलौकिक होता है। spiritual, it is alaukic हर beyond this प्रकार से world in all forms. लौकिक तरीके से In मोह a होता laukic नहीं है, way, लौकिक there is no तरीके से attachment. कोई लोग क्रोध The- नहीं रहता, Based on laukic, there is no एक अलौकिक anger संबंध or होता no है। greed. It's a beautiful बहुत अच्छा संबंध alaukic होता है relationship, beautiful relationship, a very जब good आपस में relationship. When लौकिक माँ, लौकिक पिता, जो भी लौकिक है, whoever laukics you have, जब father, आप एक ऐसा family, अलौकिक संबंध जोड़ते हैं and when you create that तो एक दूसरे alaukic relationship with them, शुभ भावना, शुभकामना रहती so है, there's a lot of good wishes and pure प्रेम feelings रहता for है। each other. There is cooperation amongst each other. ये बहुत बहुत सुखदायी संबंध है। This is a relationship which gives lots of और धीरे happiness. धीरे And slowly, वो अलौकिक संबंध से this alaukic relationship, पहले आत्मिक है, फिर first, लौकिक there होते is that हैं, spiritual फिर relationship, ईश्वरीय then there परिवार is हो a जाते हैं, alaukic ईश्वरीय relationship, परिवार हो जाते हैं। and then we are godly तो एक family. बहुत अपनापन लगता है So ईश्वरीय there's a संबंध deep में। feeling of belongingness in the आप God's देखेंगे कि family. बेशक लौकिक में रहते You हैं, might have संसार में seen we रहते might हैं, be staying in we might be staying in household, परंतु living in laukic, परिवार से हमारा बहुत स्नेह but रहता है। there's a lot of love with the godly family. अंदर में बहुत एक दूसरे के प्रति सम्मान रहता है, Lot of respect समीक्षा and भी रहती regard है, for each other. There is closeness, but also उससे respect and बाहर आ regard. जाता है And दैवी then संबंध। from that develops divine जब ये relationship. परिवार ईश्वरी संबंध So, दैवी godly संबंध family, godly relationship, then comes आपस में divine deity दैवी uh, गुणों का प्रयोग करते हुए relationship, because we come into interactions based on the सुख divine अवसंतोष virtues. में भी संगम So, युक्त है even in confluence कि age, जो भी even in क्रिया करते relationship, हैं, and whatever action that we perform, क्योंकि उसमें मोह लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, because there is no vices of आत्मिक anger, संबंध है, attachment, greed, and there is that feeling इसलिए of जैसे soul भी आपके consciousness, व्यवहार है, the interaction is based on divine एक virtues. ऐसे कर्म होते हैं जिसको बोलते हैं So the कर्तृत्व actions that are संपन्न अकर्मी created, जीवन। so the actions that are created are वो अकर्मी akarmi, जीवन which में is जो स्थित neutral रहता है, actions. So the state of a neutral जिसमें karmi हमारा स्नेह है, is इसलिए स्नेह there is रहता है love, there is कि affection. आपस The में affection is एक not दूसरे के because, प्रति oh, you're giving me affection. स्नेह, No, it's not based स्नेह का that. जो आदान है So there's no वो give and वास्तविक भाव है। take of love and affection, तो but it's आत्मिक purely soul conscious. The feeling संबंध is जो है spiritual. उसमें जो आपस में व्यवहार और एक दूसरे को सहयोग तो देना ही होता है, We still have to give बांध नहीं cooperation to each बनता, other, but there is no परंतु creation of any जगत में जो bondage. जीवन बनती है A वो life of a सतयुग का neutral जीवन karma yogi. अकर्मी जीवन है। So in golden age and in the silver age, बेशक कलाएं the धरती में life तो is होती हैं, a karmi, means मगर neutral कोई karma. हिसाब किताब नहीं बनता है। There will be तो no अलौकिक creation युग of में जो व्यवहार, accounts. जब अकर्मी So जीवन at होगा, the confluence age, आपको खुद महसूस होगा you will start to feel that जो a भी व्यवहार karmi, the है, बातें neutral हैं, दिखते नहीं karma है लेकिन stage. You will see, you will जीवन talk, you will में वो interact, आधार रखते हैं
but your stage has to be और फिर वही beyond. बोलते हैं And in the रुपए mind, हिसाब this किताब is the बहुत thought, कुछ okay, सुधरा है there is the few accounts that's left परंतु behind that's getting 20% settled. 80% अच्छे संबंध But बन रहे हैं ना 80 to दिव्य संबंध 90%, the relationship that is created is good, it's divine, it's क्योंकि सच्चे godly. सच्चे संबंध तो होंगे ना वहाँ पर Because even in golden age, there will be प्रकृति relationship. संबंध But those relationships बहुत बहुत श्रेष्ठ संबंध होंगे are very क्योंकि elevated. संबंध जीवन में एक सहयोग है आधार है The relationship is a little, it's kind of a परंतु ये foundation, a support. संयुक्त में भी Even taking this support हम लोग and आधार में नहीं है cooperation, डिपेंडेंट नहीं है though we are taking the cooperation and support, we are not जिसको कहते हैं सारे dependent on जीवन it. मनुष्य की As they do say, that इंटरडिपेंडेंट entire है life of a human संबंध being होते is हैं interdependent. जैसे एक मशीन होती है उसमें Just हमेशा like a लिंक machine, there are different parts in a आपस में machine, कनेक्शन तो रहता है but ना still there are connected एक कप internally टूट amongst each गया other. Even a तो मशीन small बंद instrument मशीन is नहीं broken, चलती है the machine will stop. वैसे संसार में भी जो The संबंध है same way, even in परिवार world, है whatever relationship that we हरेक व्यक्ति have, अपना कोई ना कोई everyone पार्ट होता है has a fixed जरूरतें part सभी होती हैं and it is necessary as well. परंतु Each उस one's role आधार is के नीचे necessary. But having the अगर soul conscious सच्चे state, संबंध the रखते हैं awareness of that soul that we keep, तो कर्म बंधन नहीं बनता then the तो विषय actions बंधन are नहीं not, बनता है they don't create bondage or और accounts. क्योंकि अब हम जब आपस में व्यवहार करते हैं And now, when we interact, न केवल see हमारी that दृष्टि each other, दिव्य है our vision is soul बाबा conscious. की Not याद just our vision is दिव्य है soul conscious, but because there is जो भी remembrance हमारे of साथ Baba, संबंध है वो भी सुखमय whatever है accounts that we have from the past gets समय settled. पर बहुत काम हो जाता है At conference age, क्योंकि there's a lot of जितना things that पूर्व happen. जो हिसाब किताब Whatever रहता the है past accounts वो there हमको are, तो करना it है gets settled, it gets settled, और we have to सबसे बड़ी settle it. बात And the यदि biggest इतने thing is, श्रेष्ठ कर्म करने हैं we have to do such तो elevated भविष्य के action प्रारब्ध that our future attainments सत्य त्रेता के लिए of बना देते हैं golden and बराबर silver करते age हैं it's created. So we're doing double work, याद settling करते and हैं also व्यवहार accumulating. करते हैं So we're remembering, we're interacting, and then with that we याद settle the करते हैं accounts. बाबा की शक्ति मिलती We है remember Baba, we absorb power, तो फिर कर्म virtues, भी हम करते हैं and सुकर्म so we करते हैं do elevated action, और सुकर्म करते positive करते action, and हमारे based on कर्म that संबंध positive action, बढ़ते जाते हैं our relationship that is जब created कर्मों is की समझ और divine. संबंध की समझ आ जाती है And when we understand तो karma and बाबा कहते हैं relationship, बच्चे then Baba says, तुम्हारे सब child, संबंध तो मेरे से हैं all your relationships are with me. माता पिता भी है बाबा भाई Mother, बहन भी है father, friend, टीचर सतगुरु भी companion, है teacher, गाइड है Satguru, लिबरेटर भी है guide, liberator. He's all of that. सब संबंध बाबा से है हमारे All relationship is with और बाबा Baba. के संबंध में रहते हुए And हम staying सबके साथ संबंध भी with जोड़ते हैं Baba, we fulfill all तो फिर कोई relationships कर्म as बंधन नहीं well बनता है with the logics. So and then there is एक no होता है creation of bondage. हम One, किसी से सेवा लेते हैं इसलिए to लेते हैं take seva, to take क्योंकि वो service from बड़े होता है तो someone करना because चाहिए someone is younger to you, who एक they have होता to है do it. आपकी And the आवश्यकता है other, it's a तो सहयोग necessity, लेना पड़ता and है you take the cooperation from the other. तो एक जैसे कि अंदर में So आत्मिक internally, आध्यात्मिक संबंध when that चलेगा soul और consciousness and that हमारी जीवन feeling of शैली बदलेगी spirituality is there, our whole life तो is हम सब entirely प्रेम changed. परिवार में In this godly family, एक दूसरे को सुख और सहयोग we give each other cooperation and love. मैं देखती हूँ कि कई बार I see, I observe शायद many ऐसे times लोग कई there are बहनें हैं many sisters. जिनको कर्म से सेवा करनी होती है They do a lot of karma तो seva, मैं मन में karmana seva. सोचती हूँ So in my mind, I मैं मन से think, सेवा करूँ okay, let me serve through the mind. योग से सहयोग दूँ Let me give the cooperation through yoga जैसे वो ठीक रहें सब so that they are वातावरण सही हो okay. Let the atmosphere be okay क्योंकि सेवा तन की भी है मन की भी है because धन they do की भी है seva through the body, through कोई wealth, धन से through कर mind. पाते हैं Some are able to do through the wealth, कोई तन से
Some are able to do the wealth through the body, and some are able to do all the three. The Kumaris, they don't have much wealth, but whatever they get through the lokik or from anywhere they get, we put it in the seva of the yajna. Whatever we get personally, it's given, it's been offered to the yajna. So then the feeling that emerges is we're not just we're doing seva, but we're also taking seva. So when there is cooperation of everyone in the family, when there is loveful interaction, there is happiness, and also and the feeling of family is also maintained. So now we have to give godly love, spiritual love, and that we should have that feeling that we are the unlimited Father's family, godly family. And we should be such an example to the world that, oh, look, they're all from different families, different religions, different languages, and they're staying together with so much love. And that love is this spiritual love, or if you want to call it soul conscious love. At Conference Age, Papa says, leave the body and the bodily relationship. What does that mean? Baba doesn't mean to leave, oh, leave away, don't keep any connection. No, but make it alokik, make it spiritual. Bring everyone into that soul conscious interaction. They're godly children, and to have that vision, that attitude towards them, godly children. Papa, when he says leave, many people say, how do I leave? I have to stay. Baba has never stopped us from living in the family, but our awareness, our vision, our attitude has to be transformed. So then it will no longer be body conscious relationship, but a spiritual relationship. And spiritual relationship means there won't be any sorrow, there won't be any sadness. So we'll keep an attention on our relationship, because Baba said bodily relationship. So no, everything is spiritual relationship. We'll keep that kind of an awareness. So whatever action that we do, it will be elevated and it will be loving. Shanti.